हे गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड माय नेम इज पूर्वा। गाइस, आज हम लोग चिरंजीवी सर का ट्रिब्यूट वीडियो देखने वाले हैं जो ANR नेशनल अवार्ड ने उनको ट्रिब्यूट दिया था। हाँ। नागार्जुन के पापा ने। सो उनके मतलब याद में जो प्रोग्राम रखा था, याद है हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें अमिताभ बच्चन को भी इनवाइट किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसी प्रोग्राम का वीडियो होगा। सो या कुल मिला के ये वीडियो जो है रिएक्शन वीडियो चिरंजीवी की पूरी जर्नी है एंड इट्स अ ट्रिब्यूट वीडियो रिएक्शन गाइस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट वॉच द पर्टिकुलर वीडियो एंड इन बिटवीन हम लोग इस पे डिस्कशन भी कर सकते हैं बिकॉज बाद में हम भूल जाते हैं कि हमको कौन से पॉइंट्स कब बोलने हैं। सो इन बिटवीन भी हम लोग डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 స్టార్ట్। పద్మ విభూషణ్లో శ్రీ చిరంజీవి గారు ఈ అవార్డుని అందుకోబోతున్నారు. వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియచెప్తూ from the humble beginnings, अमिताभ बच्चन बैठे हैं आगे. megastar Chiranjeevi garu had to the image that he has carved himself. हर बार यही एंकर है. It's your dedication, hard work and lots of patience. శ్రీ కొనిదల శివశంకర వరప్రసాద్ గారు చిరంజీవిగా సుప్రీం హీరోగా మెగా స్టార్గా బాస్ ఎంటర్ అవుతే బాక్స్ ఆఫీస్ షేక్ అయిపోదా మరి. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి గురించి ఒక స్పెషల్ ఏవి ముందుగా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాము. సో లెట్స్ హావ్ ద ఏవి ప్లీజ్. हम पवन कल्याण सर की भी. This is a tale of two legends. A tale of two stalwarts with many similarities. Both had humble beginnings, both first generation actors, and both have risen to great heights in cinema. First generation actors. In 1978, a passionate young man made his debut in Telugu films with Pranam Karidu. This man was Sri Chiranjeevi Konidala. With his intense performances, energetic dances, and perfect comic timing, Chiranjeevi Garu instantly caught the attention of the audiences and the filmmakers alike. He is a veritable and unique combination of Rajinikanth, Kamal Haasan, but still distinctly different from each one of them. Wow, he is a unique combination of Rajinikanth and Kamal Haasan, but still distinctly different from each other. Distinctly different सोचो, from each other. पहले दो लोग उनके कॉम्बिनेशन है वो. सोचो. Through sheer dedication, he established as the mega star of Telugu cinema. సింహాసనం మీద కూర్చునే అర్హత But in music, I mean dance की ability ఇక్కడ ఈ ఇంద్రసేన. ये सबसे Even फेवरेट. today, 46 years since his debut, he continues to enthrall millions of his loyal fans. सही है. ये तो सीन देखा है अपन. Despite being away from the silver screen for a decade due to his involvement in politics, when Chiranjeevi 10 साल तक वो आई थिंक सिल्वर स्क्रीन पे नहीं आए थे. अच्छा. मुझे ये पता नहीं था. मुझे लगा कि उनकी मूवीज आती रहती होगी, बट 10 साल तक अवे थे वो ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस. मैं ये बोल रहा था कि ये बोल तो रहे हैं कि कमल हसन सर और रजनीकांत सर का यूनिक कॉम्बिनेशन है, बट जो डांसिंग एबिलिटी है वो तो इनकी इनहेरिटेंट है. Garu's comeback film Kaidi number 150 was released in 2017. It became the biggest hit in Telugu cinema at that time. Chiranjeevi Garu, you are a true megastar. His numerous awards include 3 Nandi Awards, 9 Filmfare Awards, the Raghupati Venkaya Award, an honorary doctorate from the Andhra University, and Padma Bhushan in 2006. In 2022, he was honored with the Indian Film Personality of the Year Award. And in 2024, he was recipient of India's second highest civilian award, the Padma Vibhushan. The king of cinema of this country. Chiranjeevi Garu is known as the man of the masses. This year, Chiranjeevi Garu was also honored with the IFA Outstanding Achievement in Indian Cinema Award. తెలుగు చలనచిత్ర రంగానికి రెండు కళ్ళు, అటు ఎన్టీఆర్, ఇవాళ ఏఎన్ఆర్ మధ్య మూడవ నేత్రం చిరంజీవి. నా బాడీకి బోన్స్ ఉన్నాయమ్మా. చిరంజీవి గారి శరీరంలో బోన్స్ ఎట్లా పడితే అట్లా. Over his 46-year career, Chiranjeevi Garu has acted in 156 films and performed over 24,000 dance moves in 537 songs, a unique record indeed. The Guinness World Records recognized him as the most prolific actor-dancer in Indian cinema. Prolific film Star in Indian film industry. డాన్స్ చేయడం విషయంలో
हाँ मुझे कमेंट्स पता चला था इस गिनीज संदेह में वर्ल्ड Their mutual respect and admiration culminated in them sharing the screen in the film Mechanic Alludu. This iconic collaboration not only showcased their talents but also immortalized their deep bond both on and off the screen. proud to say that I am great fan of his towering personality. He great character. It is also interesting to note that the only two actors from the Telugu film industry to be honored with the coveted Padma Vibhushan are A.N.R. Garu and Chiranjeevi Garu. Both have always been committed towards giving back to society. वो तो है इनका। हाँ ये जो चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट है इस पे हमने एक रिसेंट वीडियो बनाई जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम आए थे एंड उन्होंने स्पीच दी थी एंड चिरंजीवी सर को कांग्रेचुलेट किया था। एंड इस वीडियो में दोनों की चीजें दिखा रहे हैं, वो मतलब जो नागार्जुन के फादर को भी दोनों की दिखा रहे हैं, यस, और उनके भी सीन्स दिखा रहे हैं। 10,000 प्लस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स कैरिड आउट। कॉर्निया होता है ना आंखों का। As India's tourism minister in the Indian cabinet and as Rajya Sabha MP, Mr. Chiranjeevi has initiated various development projects and good practices. ఒక స్ఫూర్తి కలగడానికి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఇటువంటి అన్ని అవసరం. A journey which began with one young man pursuing his dream in cinema, armed with only conviction and confidence in his own self, has today resulted in inspiring a generation of actors, filmmakers and technicians. అర్జున్ రెడ్డి తీసినోడు చిరంజీవి ఫ్యాన్, హృదయకాలం తీసినోడు చిరంజీవి ఫ్యాన్, అక్కడ ఇక్కడ లేదు అంతా చిరంజీవి ఫ్యాన్స్. His own family has made him proud with their individual journeys and pursuits. The Mega family is a family of talented actors and stars today. It is only fitting that the prestigious Akkineni National Award is being presented to megastar Chiranjeevi Garu by the Akkineni International Foundation. This honor, named after the late Doyen and Dadasaheb Phalke awardee Akkineni Nageshwar Rao Garu, is a celebration of Chiranjeevi's immense contribution to Indian cinema. The presence of the millennium star of Indian cinema, Shri Amitabh Bachchan ji, on this occasion only makes this moment all the more glorious. For all Telugu film lovers across the world, it's truly a moment of joy and pride. The award, in many ways, celebrates two legends, two legacies, and a shared journey of cinematic excellence. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి అవార్డు వస్తున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భంలో नाइस, द वीडियो वाज रियली नाइस एंड बहुत सारी चीजें बताई, दिखा दिया उनके बारे में, जो उनकी जो स्ट्रगल थी, स्ट्रगल से लेके उनके डांस के मूव्स और उनकी इतने भी अवार्ड्स 24,000 moves in I think 500 dance songs। तो सोच सकते हो इस वजह से आई थिंक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो हुआ था, रिकॉर्ड बना था। और अभी मुझे लगा उनको पद्म विभूषण मिला, लेकिन और भी बहुत सारे उनको नंदी अवार्ड्स और सारे के बारे में बताया हमें, फिल्म फेयर अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स और पता नहीं कौन से आज उनको ANR नेशनल अवार्ड मिला जो कि नागार्जुन की फैमिली की तरफ से मिला है, मतलब इस वीडियो में नागार्जुन की फैमिली की तरफ से मिला है। और ये दोनों के स्ट्रगल को उन्होंने सेलिब्रेट किया, इवन नागार्जुन के फादर को भी इसमें कोट किया है साथ में, डेब्यू भी आई थिंक साथ में हुआ है, कई मूवीज लग रही मुझे साथ में है एंड साथ में ही हाँ सही है। एंड उनको तो उनके पापा की तो मैंने एक ही मूवी देखी नागार्जुन के पापा की, और वो जो मनम मूवी है जिसमें वो एजेड हो गए थे उस काफी, उनकी यंग तो जो मैकेनिक मूवी आई थिंक उसमें दोनों की जोड़ी है साथ में। एंड वो मूवी का ट्रेलर अगर कहीं मिलेगा, कहीं भूला भटका ट्रेलर बनाया होगा किसी ने तो हम चेकआउट करेंगे, या फिर कोई सॉन्ग मिलेगा तो सॉन्ग देखेंगे टू सी कि क्या था उस टाइम का एरा, कैसे दिखते थे वो। एंड हाँ चिरंजीवी सर तो पहले बहुत ही डिफरेंट दिखते थे जब उन्हें डेब्यू किया था, एंड आई थिंक उनकी यूएसपी सिर्फ डांस है। एंड 1978 में उनकी मूवीज का उन्होंने डेब्यू कर लिया था, और उस टाइम पे उन्होंने जैसे डांस मूव्स दिखाए थे इसके अंदर, वैसे डांस मूव्स कोई नहीं करता था। आई थिंक उसकी वजह से ये मेगा स्टार बने। पर ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें सारी चीजें जो हमने नहीं देखी थी वो अभी सारी चीजें देख ली हमने, और बहुत अच्छी वीडियो थी। एंड ये स्माइल क्यों नहीं कर रही, शायद अपने आप के स्ट्रगल को देख के थोड़ा इमोशनल हो गए। अमिताभ बच्चन भी है पास में बैठे हुए हैं, बट पवन सर नहीं दिख रहे। पवन कल्याण सर पता नहीं कहाँ, मुझे पता नहीं था कि 10 साल का इन्होंने ब्रेक लिया था